Hello everyone. Today we will learn a new important topic, that is law of conservation of linear momentum. So first we focus in the heading that what is the meaning of conservation. Conservation means constant. Conservation means constant. And a constant care over linear momentum. And you must be remind that in every body is remaining at constant whenever there is no external force impressed on their body. So in this case also, the linear momentum of the system of bodies remaining constant if there is no external force impressed on their body. It must be know that if there is no external force impressed on the system, then the system is said to be isolated system. Isolated system. Then the system is said to be isolated system. And if there is a number of particles placed in isolated system, then you must be reminded that isolated system is there is no external force impressed on that system. So the total momentum of different particles in isolated system is constant. So तुम्हें सब बेले मन रखिथिबो जे कंजर्वेशन रो वार्ड आउछे कांस्टेंट रो वार्ड आउछे ले मन रखिथिबो जे एक्सटर्नल फोर्स सब बेले जीरो ही हेबा बिकॉज़ तुम्हें जानि छ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रु जे फोर्स एक्सर्टेड बा एक्सपीरियंस बा एक्टिंग न हेबा जाय गोटे बॉडी सब बेले कांस्टेंट रहबा तो कांस्टेंट रो मीनिंग आउछे मींस यू कीप फोर्स इज जीरो बिकॉज़ इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन द बॉडी इज ऑलवेज रिमेनिंग एट देयर ओरिजिनल स्टेट. So in this case also the linear momentum is constant. That means there is no external force. Then the momentum of the body is constant. So मन रखिथिबो constant रो word आउछि means force टा सब बेले जीरो हेबा external force टा सब बेले जीरो हेबा सेते बेले ही जे कोनोसी बॉडी कांस्टेंट रहबा. आ आमे जेतु इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पढुछु तो फोर्स जीरो हेबा force there is no external force impressed on that system, then the linear momentum of the system is conserved or constant. So मन रखिथिबो जे कोनोसी सिस्टम रे जदि फोर्स एक्सर्टेड न हेबो सेते बेला हम से सिस्टम को कहि पारम आइसोलेटेड सिस्टम. सो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम रो पहिला हम तीनटा स्टेटमेंट दैके तीनटा देखो हमें लिखि पारबो तीनटा स्टेटमेंट जाको लिखि पारबो. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो this law states that if there is no external force acting on a system of particles, system रे जते भी particles रहउछि सब particles ऊपर जदि हमर external force acting न हेबो ले the total linear momentum of the system is constant. वैसे particle मानो total momentum टा constant हेबो because there is no external force impressed on that system of particle. So जेतु force नहीं ना, so the linear momentum of the particles is constant. हम ଏବେ प्रूफ करके देखामा एग्जांपल संग मैं देखेबी खाली मन रखिथो हम सिंपली मन रखिथिबो जे कंजर्वेशन बा कांस्टेंट केते बेला आसबा जेते बेले तमर फोर्स एक्सर्टेड न होइथिबो. अब फोर्स जदी एक्सर्टेड न होइथिबो ले तमर इन दिस केस द लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कांस्टेंट. सो देखो एबे आगुरे स्टेटमेंट तमे इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल जगह रे तमे गुटे धारी ने लिखि पारबो आइसोलेटेड सिस्टम. Because isolated system is represent there is no external force impressed on their system, then their system is said to be or represented as isolated system. So this law states that the total momentum of different particles in isolated system is constant. तो देखो भाई there is no external force जगह रे लिखि पारबी only isolated system because isolated system ही बुझो जे there is no external force impressed on their system. तो जे कोनोसी जिनिस को जदि हम आइसोलेटेड सिस्टम में रखमा ले कांस्टेंट रहबा. तो इन दिस केस ई सिस्टम ऑफ पार्टिकल रो के जिनिस कांस्टेंट रहबा मोमेंटम टा जेतु हम एने पढुछु लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम दैट मींस लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कीप ए कांस्टेंट ऑफ कंजर्व. सो द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देन द लिनियर मोमेंटम द टोटल लिनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट. देखा जाइए सर दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम डिफरेंट पार्टिकल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. आ गोटे जिनिसटा मन रखिथिबो जे जेते बेले गोटे सिस्टम रे ए नंबर ऑफ पार्टिकल रहि पारबा प्लस ए नंबर ऑफ पार्टिकल जदी पाखा पाखी क्लोज टू पेक विथ ईच अदर जदी रहबे आ मोमेंटम बेल तो बुझछो दे आर मूविंग विथ देयर मास बिकॉज़ मोमेंटम हम ऑलरेडी जानि छु जे कोनोसी पार्टिकल जदी मास सहित गति करबा दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पूरे
सिस्टम में जदि बहुत गुड़ा पार्टिकल अछन से माने जदि मास सहित गति करूछन बेले इट इज पॉसिबल दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर bombarded or collide with each other. So if the number of particles are collide with each other in a system of particles, then the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. का माने जेते बेले सिस्टम ऑफ पार्टिकल रे तुम सिस्टम रे तुम पार्टिकल माने मोमेंटम होचन बा मास विथ वेलोसिटी रे गति करूचन सेते बेले जदि तुम पार्टिकल्स माने कोलाइड हेबे कोलाइड हला परे तुम ताकर मोमेंटम जेते रहबा कोलाइड हला पूर्व रूपी सेते रहबा देन इज मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व सो वी से दैट दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सो क्लियरली बुझलो हेडिंग रू भी बुझी होचे जे मोमेंटम टा कंजर्व रहले ही हमें ताके कहमा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ कंजर्व केते बिल जाय रहबा जेते बिल जाय तार ऊपर किछि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इंप्रेस हे नथिबो आ एक्सटर्नल फोर्स इंप्रेस न होइथिले ताको हम काहे कहि पारबा आइसोलेटेड सिस्टम तो सिंपली बुझी पालो स्टेटमेंट तमे लिखि पारबो जे इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल फोर्स जदि न पड़बा बोले मोमेंटम इज कांस्टेंट सर फोर्स न पड़ले मोमेंटम कांस्टेंट अब फोर्स न पड़बा जाय तो हम डायरेक्ट लिखि पारबा आइसोलेटेड सिस्टम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स जाय तो हम लिखि पारबा आइसोलेटेड सिस्टम तो दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम of particle in isolated system is zero because isolated system represent there is no external force. आउ जदि फोर्स न पड़बा तले बॉडी रो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन रे जेते थिबा आफ्टर कोलिजन रे भी सेते रहबो किंतु मन रखिथिबा मोमेंटम ता सब बेले कांस्टेंट रहबा केते मिल जाय इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ओ देखो हमें एबे प्रूफ करिनो देखमा जे the momentum the law of conservation of linear momentum can be proved by Newton's second law as well as Newton's third law. So first we prove the law of conservation of linear momentum by the help of Newton's second law. So law of conservation of linear momentum derived by or proved by Newton's देखो तो तुम बारंबार कहूचे जे जदि हेडिंग रू बुझी होचे जे लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहबा कंजर्व रहबा अब कंजर्व केते बिल जा रहबा जेते बिल तक देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इंप्रेस ऑन दैट सिस्टम सो मन रखिथिबा कंजर्व रो वर्ड आउट मींस फोर्स टा जीरो रहबा बोले ही तुम प्रूव करि पारबो जे लिनियर मोमेंटम टा कांस्टेंट रह पाबो सो देखो प्रूव करो अबे सो सपोज वी कंसीडर लेट्स consider a system of n particles suppose the n particles having masses m1 m2 m3 mn moving with velocities moving with different velocities which v1 v2 v3 v4 vn respectively देखो तो मास और वेलोसिटी तो नबा के बाध्य है बिकॉज़ मास वेलोसिटी रहले ही हम जानि पामा मोमेंटम सो इन दिस केस we consider n particles and that n particles having masses m1 m2 m3 mn moving with different velocities v1 v2 v3 vn respectively. Then we find the total momentum. Suppose let total momentum is p. Total momentum is p of the system of this n particles. Then we can write that total momentum is equal to
the momentum of first particle, that is momentum of first particle is m1 v1 plus momentum of second particle m2 v2 plus momentum of third particle m3 v3 plus dot 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 plus momentum of n number particle mn vn. Clearly बुझलो? that means जेहेतु इस सिस्टम रे n number of particles अच्छे, so first particle momentum केते है m1 v1 because first particle mass m1 और first particle velocity v1. second particle momentum केते है m2 और से मूव करू छी केते velocity v2 रे. so सेमते देखलो तो lastly you find that total momentum is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus dot 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 mn vm. Then you can also write that total momentum is equal to, instead of m1 v1 you can be write p1, that is the momentum of first particle m1 v1 can be write as p1, m2 v2 can be write as p2, m3 v3 can be write as p3 dot 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 mn vm can be write as pm dot 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 pm. So we prove that law of conservation of linear momentum by using Newton's second law. So you know that Newton's second law is that the force is equal to rate of change of momentum. So according to Newton's second law, force is equal to rate of change of momentum, dp upon dt, rate of change of momentum. हमने कही जे momentum constant केते बेले रहबा if there is no external force impress on the system. से जिनिसटा सब बेले मन रखबो जे तमे law of conservation of linear momentum को जदी प्रूव करबा के चाहछो, momentum के जदी constant रखबा के चाहछो बोले सब बेले force को जीरो रखबो, because force experience न हेले ही momentum बा जे कोनोसी जिनिस constant रहबो. So if F is equal to 0, if there is no external force impressed on that system, that is F is equal to 0, force is equal to 0, then dp upon dt is also 0, because dp upon dt is also 0, because according to Newton's second law, the force is equal to rate of change of momentum. And if F is equal to 0, that means dp upon dt is equal to 0. अब तमे पढिचो डेरिवेटिव रे तमर वैल्यूटा केते बेले 0 आबा जेते बेले p टा का आबा कांस्टेंट. So in this case we can be right that p is equal to constant. And instead of p it will be right p1 plus p2 plus p3 plus dot 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 pn is equal to constant. So this is proof law of conservation of linear momentum. That is, if there is no external force acting on the system, then the total linear momentum system is constant. देखो force यदि 0 करमा, then the total linear momentum of the system is constant. So this is proof. So इस जिनिसटा में proof करू का द्वारा by the help of Newton's second law. अब हम proof करमा Newton's third law, law of conservation of linear momentum. So देखो बहुत सहज किछि नहीं ना तुम law of conservation of linear momentum constant होछि मींस मने रखिथिबा सब बेले force 0 रहले ही momentum ता constant रहबा. अब जे सिस्टम ने force 0 ताका हमें कहि परमा isolated system. तो एते मने रखिथिबो किछि नहीं ना तो लिखा जाय छै the total momentum in an isolated system is constant. Or if there is no external force, then the total momentum is constant. A constant वाला मतलब कौन law of conservation of linear momentum. So that we prove करथिलु Newton's second law, because Newton's second law तो जानिछो F is equal to dp upon dt. और यदि force के 0 करबो बोले का ना p constant. So Newton's second law रू ही पाइलो कि खाली तमे एक्सप्लेन करबा के किछि नै, खाली मास केते टनेलो वेलोसिटी केते टनेलो जा द्वारा कि तम केतेटा मोमेंटम तमे पाइ गलो. ना तो एक की अकन हम प्रूफ that is dp upon dt is equal to 0. तो force यदि 0 हो जिबा, sorry, according to Newton's second law, force is equal to rate of change of momentum. तो यदि मोमेंटम के कांस्टेंट करबा चले फोर्स के 0 कला तो फोर्स यदि 0 हो जिबा, फोर्स यदि 0 हो जिबा बोले p टा का हो जिबा कांस्टेंट. आई टोटल मोमेंटम देरा तुम केते लिखबी p1 plus p2 डॉट डॉट p.
इज इक्वल टू कांस्टेंट आ ई जिनिसटा तमे पाबा काजे केतेटा मास नेला और केतेटा मोमेंटम नेला जहाँ कि फास्ट मास फास्ट वेलोसिटी रो p1 लिखि पार और देखो तमे जानि थिबो ना एवरेस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ रो हमें लीनियर मोमेंटम प्रूव करना सो न्यूटन्स थर्ड लॉ रो देखो लीनियर मोमेंटम के हिसाब रे प्रूव होगा जन में लास्ट स्टेटमेंट टा लिख लीजिए बिफोर कॉलिजन ने टोटल मोमेंटम जेते रहबा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रो आफ्टर कॉलिजन ने भी सेते मोमेंटम रहबा केते मिल जाए जेते मिल तक देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इंप्रेस ऑन दैट सिस्टम तो मन रखिथिबो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जदि प्रूव करबा को तमे चाहू छ पहले फोर्स इज ऑलवेज रिमेनिंग एट कांस्टेंट सॉरी फोर्स इज ऑलवेज remaining at 0 that means there is no external force then the momentum of system is conserved or constant so prove karo ebe law of conservation of linear momentum derived by Newton's third law. Newton's third law. Third law हमें डिराइव कर. So तमे जानिछो Newton's third law रो काजे दुईटा फोर्स निहाती दरकार. One is act as action and another force is act as reaction. सो दुईटा फोर्स निहाती हमके दरकार न्यूटन्स थर्ड लॉ काजे और से थर्ड लॉ रो हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करना सेकंड लॉ किछि नहीं खाली सेकंड लॉ रे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम f इज इक्वल टू सो f के 0 कर देले p ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाउछे तो सेकंड लॉ रो तुम मोमेंटम बा p कांस्टेंट हेबार बहुत सहज है किंतु थर्ड लॉ रो तुम प्राय तो परीक्षा रे पचरेसी थर्ड लॉ रो तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव करो सो थर्ड लॉ का हमके मैक्सिमम दुईटा फोर्स दरकार तो फास्ट देखो डायग्राम देखो सपोज ये बॉडी के धरले मुई a और ये बॉडी के धरले सपोज धरो b लीनियर मोमेंटम मींस दिस टू बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पूरा स्ट्रेट लाइन में मूव करबे सो देखो सपोज द b a having masses m1 and b having masses m2 and a moving with initial velocity u1 and b moving with initial velocity u2 एंड मन रखिथबो जे ई दुईटा बॉडी कॉलिजन हेले ही ई दुईटा बॉडी पाके आनले ही तुम एक्शन रिएक्शन पेयर आसबा न्यूटन्स थर्ड लॉ आसबा बिकॉज़ ई दुईटा कोलाइड हेले तो ई तार ऊपर एक्शन पकेबा ई तार ऊपर रिएक्शन पकेबा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आसबा सो कोलाइड हेबा अछि बेले तुम प्रैक्टिकली बुझो जे ई तार वेलोसिटी अधिक हेबा की तार वेलोसिटी ए रो वेलोसिटी ही अधिक हेबा बेले ही से बी रो पाके जाइगर कोलाइड ही पारबो सो तमे मन रखिथबो इने दैट u1 इज ग्रेटर देन u2 इधर वेलोसिटी अधिक हेले ही से इने कोलाइड हेबा तर माने दिस इज द कंडीशन बिफोर कॉलिजन एबे देखो ई a और b का है जेतु ई रो वेलोसिटी अधिक আছে आफ्टर सम टाइम t सपोज धर डेल्टा t टाइम रे तुम्हारी a और b का कोलाइड हेले आ तुम तो जानछ a रो मास m1 b रो मास होचे m2 कोलाइड हेले सो दैट हम कहि पारबी दिस कंडीशन इज ड्यूरिंग कॉलिजन एबे कोलाइड हला पर से माने आउथरे गेट सेपरेट हेबे तो देखो एबे आउथरे a बॉडी और b बॉडी का सेपरेट हेले मास का तो समान ही रहबा m1 m2 बट जेते बेले से माने सेपरेट कंडीशन के हम कहबी आफ्टर कॉलिजन तो सेपरेट हला परे दिस a इज मूविंग विथ फाइनल वेलोसिटी v1 a इज मूविंग विथ फाइनल वेलोसिटी v1 a ता फाइनल वेलोसिटी v1 रे मूव कला और b ता तमर फाइनल वेलोसिटी v2 रे तमर मूव कला किंतु न्यूटन थर्ड लॉ का जे केन कंडीशन इंपोर्टेंट ड्यूरिंग कॉलिजन का इंपोर्टेंट बिकॉज़ कॉलिजन टाइम रे ही a b ऊपर फोर्स पकेला तो a b ऊपर फोर्स पकेला सो a जेते बेले b ऊपर फोर्स पकेला b आके पड़ेला तो इने मिले कि पारबी फोर्स एक्टिंग ऑन b बाय q इरा को एक्शन कहि पारबी तो b a ऊपर फोर्स पकेबा तार माने यार फोर्स जीवा फोर्स एक्टिंग ऑन a बाय q इरा को कहि पारबी रिएक्शन बिकॉज़ a b ऊपर जदी एक्शन पकेला बोले b a ऊपर रिएक्शन पकेला अब बहुत सहज किछि नै ना b आगे अछि तो फोर्स एक्टिंग ऑन b बाय a ने a आगे अछि तो फोर्स एक्टिंग ऑन a
ए ऊपर फोर्स पड़ा के पकेला बी पकेला ए ऊपर फोर्स बहुत सहज है अब ये कंडीशन बहुत इंपोर्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन टा बहुत इंपोर्टेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ रखा जी किंतु बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बहुत इंपोर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम रखा जी कहाँ जे लिनियर मोमेंटम कहिछि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन रे जेते रहबा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रे सेते रहबा किंतु केते बेले जेते बेले देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इंप्रेस ऑन द सिस्टम तो मन रखिथिबो गोटे वर्ड टा फोर्स जीरो हेले ही तमे मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को प्रूव करी पारबो तो देखे खाली जेति लिखिछो तमे बाबू माने फर्स्ट एक्सप्लेन करि दियो तापर हम प्रूव करबो तो कंसीडर an isolated system consider करो और सेना रखलो केते अब टू बॉडी रखलो अब टू बॉडी A and B having masses A रो मास केते अछि having masses m1 and m2 having masses m1 and m2 moving with initial velocities u1 and u2 respectively तमरा आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करो जाने कि बॉडी दुटा अछि A और B जार मास होछि m1 m2 अतः इनिशियल वेलोसिटी होछि u1 and u2 जहाँ चित्र रे अछि एक्सप्लेन करो दुटा बॉडी नालो जार मास होछि m1 m2 और जार इनिशियल वेलोसिटी होछि u1 u2 तापर ड्यूरिंग और एंता लिखि पारबो इन टाइम डेल्टा t सपोज धरो डेल्टा t टाइम रे दुटा कोलाइड हेले these two body A and B collide with each other these two bodies बोले A और B के बुझे छे collide with each other हमने इन डेल्टा t these two body जगह थी तमे लिखि पारबो इन डेल्टा t A and B collide with each other सरला आ collide हला परे काना हेबे and they get separate collide हला परे काना है during collision पर सब सेपरेट हेबे कि नहीं they get separate and moving with final velocity v1 and v2 और जन वेलोसिटी रे मूव करते जन मूव केन लाइन में करू अलोंग स्ट्रेट लाइन हम इटा आगे लिख दी तो लिखा अलोंग स्ट्रेट लाइन को सरला इटा खाली तमे एक्सप्लेन करो सो न्यूटन्स थालु जदी तमे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम प्रूव करबा अछि तले तमके निहाती थाल का जे एक्शन रिएक्शन पेयर दरकार सो तमे जानिछो जे दुईटा बॉडी बिफोर कोलिजन रे केते मोमेंटम होची आफ्टर कोलिजन रे केते मोमेंटम होची से दुईटा मोमेंटम के जदी हम समान करि पारमा बोले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव ही जीवा आ समान करवा काके नहीं करी फोर्स के जीरो करी बिकॉज़ फोर्स जीरो हेले ही कांस्टेंट रहबा मोमेंटम का और थर्ड लॉ जदी तुम प्रूव करवा अछि बोले ई ड्यूरिंग कोलिजन कंडीशन भी बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज़ ई नहीं एक्शन रिएक्शन पेयर टा आसु छै तबे तुम लिखि पारबो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इज एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन तो लिखि दियो एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन का जे थर्ड लॉ हम प्रूव करवा के कहू ना तो थर्ड लॉ के आगे लिखि दियो according to Newton's third law, that is action is K, FB, your force acting on B by A. A B ऊपर force पकेगा, so A force acting on B, A B ऊपर force पकेगा, तो this is action is equal to reaction K, B A ऊपर force पकेगा, तो B A ऊपर force पकेगा, तो B और reaction माइनस लगला एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट एटा हम पढि छ न्यूटन्स थर्ड लॉ एबे काना करबी मई देखो बाबू माने मोमेंटम के आनबा के चाहिए बिकॉज़ मैं मोमेंटम के प्रूफ करबा के चाहू छी
तो मोमेंटम केतेबेला आसबा बाबू माने इआरे भी टाइम के मल्टीप्लाई करबो इआरे भी टाइम के मल्टीप्लाई करबो बिकॉज़ तुमके मुई प्रीवियस क्लास में पढ़े छे जे फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इंपल्स और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम न्यूटन थर्ड लॉ भी तुम सेकंड लॉ भी तुम जानिछो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dt upon dt तो f dt is equal to change in momentum किने सो चेंज इन मोमेंटम आनबा के बाध्य बाबू माने चेंज इन मोमेंटम आनबा का जे बाध्य बिना चेंज इन मोमेंटम आनले तो तुम प्रूव करबो सो न्यूटन थर्ड लॉ इज अ फोर्स एक्शन इज इक्वल टू दिस इज माइनस रिएक्शन किंतु तुम मोमेंटम आनबा का जे दुई आड़े का मल्टीप्लाई करबो टाइम सो f b into in this case also we multiply delta t minus f a b in this case also I multiply delta t because time multiply करबा द्वारा बाबू माने force into time जाके impulse को जैसे और impulse is also equal to change in momentum तो तुम इधर जगह पे लिखि पारबो केते बाबू माने change in momentum कार मोमेंटम चेंज होचे बो फोर्स कार ऊपर पड़ुचे b ऊपर पड़ुचे तो b रो मोमेंटम चेंज होचे तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ b इज इक्वल टू माइनस इने चेंज इन मोमेंटम काटा होचे ए रोटा बिकॉज़ ए ऊपर फोर्स पड़ुचे तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए देखो बहुत 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 इंपोर्टेंट काज कहली देखो तुम न्यूटन थर्ड लॉ तुम प्रूव करबा के चाहछो तो न्यूटन थर्ड लॉ का तुम जानिछो एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन सरला तापरे तुम जेतु मोमेंटम के प्रूव करबा के चाहछो तो मोमेंटम आसबा केते बेले दुई आड़े टाइम मल्टीप्लाई करबो बिकॉज़ फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इंपल्स इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम सो इट इज आल्सो रिप्रेजेंट चेंज इन मोमेंटम बट b ऊपर फोर्स पड़ुचे तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ b इन ए ऊपर फोर्स पड़ुचे तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एबे बाबू माने वैल्यू पुट कर देबो b रो मोमेंटम केते चेंज होचे बाहर कर देबो ए रो मोमेंटम केते चेंज होचे बाहर कर देबो अब पुट कर देले आंसर बाहरी गला बहुत सहज है किछि नै किंतु न्यूटन थर्ड लॉ रो प्रूव करो बोलछे तो थर्ड लॉ हिसाब से इटा आगो राखबो फोर्स इज इक्वल टू एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन तापर मोमेंटम पाबा के दुई आड़े टाइम मल्टीप्लाई करबो तो देखो हम चेंज इन मोमेंटम में देखमे इटा मु लिखे दोछे जगह नेना तो देखो हम चेंज इन मोमेंटम b रो देखमा आगो सो b रो फाइनल मोमेंटम केते बाबू माने b रो मास होचे m2 b रो मास होचे m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2 फाइनल वेलोसिटी v2 सो फाइनल मोमेंटम बाबा b रो m2 v2 तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ b बाहर करो बोलछे सो b रो चेंज इन मोमेंटम केते जानबो b रो फाइनल मोमेंटम माइनस b रो इनिशियल मोमेंटम सो b रो फाइनल मोमेंटम केते होबा m2 और फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस b रो इनिशियल मोमेंटम केते होबा b रो मास तो m2 और इनिशियल वेलोसिटी केते u so this is momentum of initial momentum so this is change in momentum of b instead of change in momentum we can be write this is m2 v2 minus m2 u is equal to minus के minus अब change in momentum of a देखो बाबू माने तो फर्स्ट change in momentum of a देखबा आछे बोले फर्स्ट momentum final momentum of a minus final moment final momentum of a minus initial momentum of a so final momentum of a के देखो a रो मास केते m1 अतर फाइनल वेलोसिटी केते v1 आफ्टर कॉलिजन पूर्वरु तर इनिशियल वेलोसिटी u1 थिला किंतु कॉलिजन परे तर फाइनल वेलोसिटी केते है v1 तो हमके फाइनल मोमेंटम a रो दरकार सो m1 v1 हेबा m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम a रो देखो इनिशियल मास m1 और इनिशियल वेलोसिटी u1 तो a रो इनिशियल मोमेंटम केते हेबा m1 u1 तो कंफ्यूज नहीं अब तुम नीचे भाबो जे b रो फाइनल मोमेंटम के हिसाब रे बारीबा और a रो b रो चेंज इन मोमेंटम के हिसाब रे बारीबा a रो चेंज इन मोमेंटम के हिसाब रे बारीबा तुम नीचे टिके रियलाइज करो किछि नहीं ना b रो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू b रो फाइनल मोमेंटम माइनस b रो इनिशियल a रो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू a रो फाइनल मोमेंटम और a रो इनिशियल मोमेंटम और a के तुम 1 धरि छ तुम जानि छ a रो मास m1 इनिशियल वेलोसिटी u1 तो तार इनिशियल मोमेंटम हला m1 u1 अब फाइनली कॉलिजन हला परे मास तो a रो m1 अकन थिबा किंतु कॉलिजन हला परे वेलोसिटी v1 इगल
तो ए रो फाइनल मोमेंटम है m1 v1 सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम संग बी रो व्यवहार करछ देखो एबे तुमे इटा के सॉल्व करो बाबू माने किछि नहीं सॉल्व कर चलो ऑटोमेटिकली आंसर बारीबा m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू देखो ये माइनस अच्छे माइनस m1 v1 देन माइनस माइनस प्लस m1 u1 प्लस m1 u1 तो तमे मने रखबो जे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जेते हबा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी सेते हबा ता माने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन रो काजे देखो केते हबा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ई हिसाब से देखो ए रो मोमेंटम बिफोर कोलिजन रे केते m1 u1 और b रो मोमेंटम बिफोर कोलिजन रे केते m2 u2 सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन केते हबा m1 u1 प्लस m2 u2 ता माने u टर्म्स के गुडे जाती रहबो काजे u इनिशियल वेलोसिटी की रिप्रेजेंट करूची u1 रिप्रेजेंट कला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a u2 रिप्रेजेंट कला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b सेटा दुईटा जाको रिप्रेजेंट होचे बिफोर कोलिजन सो u टर्म्स के गुडे जाती रहबो दैट इज रिप्रेजेंट द टोटल मोमेंटम इन बिफोर कोलिजन ऑफ a एंड b सो u मान के गुडे जाती रहबो ट्राई करो सामान्य u1 और u2 के सो हां माइनस यार के गले प्लस हबा सो m1 u1 ई माइनस m2 u2 यार के गले प्लस हबा प्लस m2 u2 मुझे सोचे कर लेली u के आगे रख देली एबे देखो ई माइनस यार के गला प्लस ही गला एबे m1 v1 यार के गले प्लस ही जीवा सो m2 v2 प्लस m1 v1 सो तुम इना लिखि पारबो बाबू माने दिस इज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू देखो এটা टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के नहीं बिकॉज़ ए रो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन केते m1 u1 b रो मोमेंटम बिफोर कोलिजन केते m2 u2 सो टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन इज केते m1 u1 प्लस m2 u2 एबे देखो ए रो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हला पर ए रो टोटल ए रो मोमेंटम केते m1 v1 कोलिजन हला पर b रो मोमेंटम केते m2 v2 सो टोटल मोमेंटम ऑफ a एंड b आफ्टर कोलिजन केते m1 v1 प्लस m2 v2 सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जेते हला टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रे भी सेते हला तार माने बिफोर कोलिजन रे टोटल मोमेंटम जेते आफ्टर कोलिजन रे भी टोटल मोमेंटम सेते क्लियरली बुझी पारला बाबू माने सीटा ही न्यूटन्स थर्ड लॉ रो तम मोमेंटम डिराइव ही गला क्लियरली बुझलो सो किछि नै ना नंबर वैल्यूटा दुई आड़े पुट कलो सो आंसर ऑटोमेटिकली बाहरी गला हला सो इटा तम परीक्षा रे पड़सी इटा के भल कर देखिथिबो आ ई कंडीशन के नि पर तम बहुत बड़ा न्यूमेरिकल एग्जांपल माने करि पारबो तो देखो गोटे मैं कहि दउचे रिकॉइल ऑफ गन recoil of gun तमे जते बेले बुलेट ता हमें फायरिंग करमा गन रु जति जते बेले हमें बुलेट ता फायरिंग करमा बोले गन पहुंचाड़ के जेसी पहुंचाड़ के देखो तुम प्रैक्टिकल देखो बुलेट के जति हमें गन रु फायरिंग करबो बोले गन ता पहुंचाड़ को आसबा अच्छा पहुंचाड़ को आसबा के कोइ जेसी रिकॉइल ऑफ गन और जेन वेलोसिटी द्वारा से पहुंचाड़ के आसबा दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी सब तरह इटा होचे गन हला गन सो ई गन रो मास धरो कैपिटल एम और जेन बुलेट के तुम फायरिंग करबो जेन बुलेट के तुम फायरिंग करबो सब धरो एटा जो बुलेट ई बुलेट रो मास धरो स्मॉल एम हला एतकी बुझलो तो एबे देखमा जे बिफोर फायरिंग बुलेट रो मोमेंटम जेते हेबा आफ्टर फायरिंग भी बुलेट रो मोमेंटम सेते हेबा बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन ने टोटल मोमेंटम जेते आफ्टर कोलिजन ने मोमेंटम भी सेते ता माने इन बिफोर फायरिंग करबारो बुलेट फायरिंग करबा पूर्वरु मोमेंटम जेते हेबा बुलेट फायरिंग कला परे भी मोमेंटम सेते हेबा सो इन हम जानि पालो कैपिटल एम इज मास ऑफ गन स्मॉल एम इज मास ऑफ bullet so according to law of conservation of
linear momentum, according to law of conservation of linear momentum, before carrying the momentum before carrying of gun is equal to momentum of after carrying the gun. So you must be know that in this condition, before carrying of gun, the gun is also is rest condition and the bullet is also is rest condition. जल्दी हमें फायरिंग करवा पूर्वरु गन भी रेस्ट रे अच्छे, बुलेट भी रेस्ट रे अच्छे. सो तमे लिखि पारबो जे द मोमेंटम बिफोर कैरिंग द गन इज इक्वल टू 0. लिखि पारबो कि नहीं? बिकॉज़ तमर मास गन रो m वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम 0, मास इनटू 0. बुलेट रो मास स्मॉल m किंतु बुलेट रो वेलोसिटी भी 0, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट इज आल्सो 0. तो बिफोर फायरिंग रे तमर मास और बुलेट जेहेतु रेस्ट कंडीशन रे अछन, सो ताकर मोमेंटम ही गला 0. दैट मींस बिफोर फायरिंग एज द मास एंड बुलेट आर एट रेस्ट कंडीशन, सो देयर मोमेंटम इज 0 इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग फायरिंग कला परे कान हो देखो. आफ्टर फायरिंग आगे लिखि दबो. आफ्टर फायरिंग v इज द वेलोसिटी ऑफ गन, जाके हम कहमा रिकॉइल वेलोसिटी of gun. और स्मॉल v लगभग जगह कैपिटल v, स्मॉल v के तो टिके ई टाइप रो लिखु छै. स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तार आफ्टर कैरिंग कला परे कैपिटल v होचे वेलोसिटी ऑफ गन, जाके हम कहमा रिकॉइल वेलोसिटी. का फेयरिंग कला परे देखबो तमरो गन ता पछाड़ के आसबा. तो फेयरिंग कला परे कैपिटल v इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. पछाड़ के आउछ सेटा के वेलोसिटी हम कहलु रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. आ फेयरिंग कला परे बुलेट रो भी तो वेलोसिटी आसबा, तो बुलेट रो वेलोसिटी द स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फेयरिंग द गन. सो मोमेंटम आफ्टर फेयरिंग द गन केता होबा? After firing the gun, the momentum of gun is kete? Momentum of gun is gun ro mass into gun ro velocity plus momentum of bullet kete hoba? Momentum of gun korlo and momentum of bullet ro mass small m and bullet ro mass small v. So this is the total momentum of this is the law of conservation of linear momentum. That is, after firing the gun, the momentum is 0 is equal to before firing the gun, momentum is mv plus mv. That is, this is represent the momentum of gun and this is represent the momentum of bullet. So total momentum after firing is एकी होगा. बुझला क्लियरली? और तमे जानिछो जे आफ्टर फायरिंग में टोटल मोमेंटम ऑफ गन और बुलेट जेते हला, बिफोर फायरिंग में भी टोटल मोमेंटम ऑफ गन और बुलेट सेते ही रहबा. बुझलो? तो इना में रिकॉइल वेलोसिटी बाहर करना, रिकॉइल और गन पड़ू रिकॉइल वेलोसिटी बाहर करना. तो रिकॉइल वेलोसिटी केते हेबा तमे कहो, तमे लिखि पारबो. दैट इज mv इज इक्वल टू माइनस m स्मॉल v. then v is equal to capital M. So this is the formula of recoil velocity of gun, जेन वेलोसिटी द्वारा गन टा पछाड़ के आसबा. तो ए इक्वेशन रो जाना पड़ू छे देखो जे तमे गन रो मास के जेते हेवी करबो, तमे जेते हेवी करबो त recoil velocity सेते कम हेबा. because capital V is the recoil velocity of the gun. बुलेट फायरिंग कला परे जेन वेलोसिटी द्वारा गन पछाड़ के आइसी, दैट इज कैपिटल V, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. तापर तम वेलोसिटी जेते कम हेबा तमर काजे सेते हेबा. काजे फायरिंग कला परे जदी गन रो वेलोसिटी जदी अधिका स्पीड रे जदी तमर पछाड़ के रिकॉइल हेबा बोले तमर कांधटा तम खा नहीं पारबा, आघात ही जीवो. दैट मींस योर आर्म्स इज गोइंग टू बी hurt if the recoil velocity of gun is so large. So if we decrease the recoil velocity of gun, then you must be increase the mass of the gun. तार माने जदी तमे recoil velocity के जेते कमेबो तमर काजे सेते बन
काजे बारंबार कहली मुझे एबे जस्ट कहली जे रिकॉइल वेलोसिटी जदी अधिका ही जिबा बेले तमर आर्म्स टा आगा थाबा बिकॉज गन एते स्पीड रे पहुंचाड़ के आसबा तमर आर्म्स टा आगा हेबा तो रिकॉइल वेलोसिटी की तुम जेते कम करबो तमर काजे सेते भल तो रिकॉइल वेलोसिटी केते बेले कम हेबा जेते बेले तमर बुलेट रो मास अधिका रहबो सॉरी तमर कैपिटल एम का गन रो मास के अधिका रहबो गन रो मास के अधिका रहबो से रीजन रो काजे देखबो गन रो मास बहुत अधिका रहसी जा द्वारा कि तमर रिकॉइल वेलोसिटी कम रहबा जा द्वारा कि तमर आर्म्स टा एते इंजुरी नै होय ड्यूरिंग यू फायरिंग सो लिखि देबो इनो इक्वली समथिंग लिखि देबो जे ड्यूरिंग द firing the recoil velocity after firing করার পরে after firing gun the recoil velocity of gun may be hot arms of person যেকোনো person বা arms কে hot করি পারবা so if the recoil velocity is decreased so that the arms can hurt or injury or hurt then the mass of gun must be increased or heavy तार माने तमे गन रो मास के जते अधिका करबो से गन रो रिकॉइल वेलोसिटी जेन वेलोसिटी द्वारा से पहुंच के आसबा फायरिंग कला पर पहुंच के आसबा गन रो मास के अधिका करले मैथमेटिकल इक्वेशन हिसाब से जाना पड़ू छे गन रो मास के अधिका करले ता रिकॉइल वेलोसिटी कमी जिबा आ रिकॉइल वेलोसिटी जदी कमी जिबा से धीरे से जदी पहुंच के आसबा बोले तमर आर्म्स टा सेते इंजूर नै होय सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम दैट गन रो मोमेंटम बिफोर फायरिंग रे जते थिला आफ्टर फायरिंग रे भी सेते थिला तो बिफोर फायरिंग रे जीवा कान रहबा बिकॉज़ गन रेस्ट ने थिला बुलेट भी रेस्ट पे थिला सो बिफोर फायरिंग द मोमेंटम ऑफ गन एज वेल एज बुलेट इज रेस्ट सो दैट टोटल मोमेंटम इन बिफोर फायरिंग इज 0 बट आफ्टर फायरिंग पर सपोज गन का रिकॉइल हला v वेलोसिटी द्वारा तो तार मोमेंटम हला mv और बुलेट का स्मॉल v वेलोसिटी द्वारा आके गला आई गन का v वेलोसिटी द्वारा पहुंच के गला रिकॉइल हला so suppose the bullet v velocity द्वारा होना और टोटल मोमेंट ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग एट की है तो बिफोर फायरिंग में जते होते टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग में भी सेते है दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जे बिफोर फायरिंग में टोटल मोमेंटम जते आफ्टर फायरिंग में भी सेते है तो लास्टली हमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बाहर कर देलो तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन रो जाना पड़ो जे गन रा मास के हमें जते हेवी रखमा सेते कम वेलोसिटी द्वारा से गन ता रिकॉइल हवा पहुंचाए सो से रीजन रखा जाए गन मास के हेवी रखसु बिकॉज़ जते कम वेलोसिटी द्वारा से पहुंच के आसबा हमें सेते कम हट हम इंजुरी हम हो थैंक यू आज के थ्रू